Hello students, a very warm welcome to you all. Please let me know if you are able to hear me. Please comment in the comment section if you are able to hear me. A very good evening to you all. I'm waiting for your reply. अगर आप मुझे देख पा रहे हो या सुन पा रहे हो, please let me know in the comment section. Yes, very good evening. Akashdeep. Good evening, Aman. Okay. So don't mind. See, if I'm looking there, it's an indication that I'm looking into your comments, right? So my name is Madhusudan Reddy, and I'll be taking up the geography subject for you. Along with that, environment as well. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, आप अपना डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. आई विल बी एड्रेसिंग ऑल योर डाउट्स. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज सेशन, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं. दैट आई वांटेड टू नो फ्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू. दैट इज, you are going to write the examination in which year? 25, 20, 26, 27? Please let me know in the comment section. Are you going to write your exam in 26, 27 or 28 or sometime later? ठीक है. You can also enable the voice button on the chat box, and you can also speak with me. ठीक है. This is going to be little interactive in session, right? Okay. So 27, this is what Aman Singh says. Akashdeep, when are you planning to give your examination? Sir, currently I'm pursuing BCom, so my plan is to give it in 27. Yeah. 27. आप भी 27 में देना चाहती हो, right? So for 27, this is the right time. See, you are actually starting your preparation way ahead than most of the other students. So you have an added advantage for the year 2027, and those students who are giving in 2026, अगर आप 2026 में लिखना चाहते हो, फिर भी ये सही टाइम है. But you should be buckling up yourself to complete the big 5 subjects. The big 5 subjects are history, geography, economy, polity, and environment. Now these are considered to be the big 5 subjects. Is big 5 subjects ko if you cover, things will be easier for you in any examination, whether it is UPSC or state PCS examinations. These subjects are very must for you to read. So our agenda today is to understand how to prepare geography for the examination. ठीक है. Beat your UPSC examination or state PCS, syllabus कुछ फर्क नहीं है, सिलेबस तो सेम ही रहता है. जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, वो थोड़ा बहुत बदल जाता है, राइट? सो आई वांटेड टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, दैट डिड यू रीड ज्योग्राफी अर्लियर? इससे पहले कभी ज्योग्राफी पढ़ा है आपने, या कॉलेज लेवल पर हो या ग्रेजुएशन लेवल पर? यस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डिड यू रीड ज्योग्राफी अर्लियर? डिड यू रीड एनसीईआरटीज? यस. देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे को लगता है ज्योग्राफी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल है. नो डाउट ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, यू हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन क्लास 6 टू क्लास 10th. दिस सब्जेक्ट इज नथिंग न्यू टू यू. ये कोई नई सब्जेक्ट नहीं है. क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपने पढ़ा है, बट सेम थिंग्स यू आर गोइंग टू विटनेस दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट नाउ. Now, how do you witness this subject and how do you have to prepare this subject? पहले आपको थोड़ा बहुत syllabus के बारे में जानना चाहिए. मैं what will I do is, first I'll show you the syllabus. Before I go into the syllabus, I would like to ask you, what is geography? What is geography? Can you define geography? क्या होता है? Yes, please comment in the comment section, or you can also speak. Geography क्या होता है? Waiting for your answer.
what is geography? Okay, study of earth. Another student says that, sir, geography means study of earth. Very good. See, when you start to study about the earth, ये जो earth है, on the earth there are some mountains, there can be plains, there can be a plateau. Like this you have various landforms. एक valley भी हो सकता है, right? There are mountains, plains, plateaus. So humans live here as well, humans live here also, humans live here also, and humans live here also. When you study the earth as a home to human being, this is what is called as geography. ठीक है, simple. Now on the earth you have many aspects such as you have animals also, you have plants also, you have constructions, you have rails, roads, living and non-living entities. When you study this beautiful earth as a home to human beings, this is called as geography. और इस ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो. खासकर you need to know the syllabus. How many of you have seen this syllabus earlier? आपने कभी देखा है इससे पहले यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है? Yes, please let me know in the comment section. You can also interact, Akashdeep. ठीक है, you can also interact, Aman, Arman. Yes, feel free. This is going to be an interactive session. आपको कोई भी डाउट्स हो, feel free to interact. Okay. Now see here, you all know that prelims exam has paper 1 and paper 2. Paper 1 में 100 questions will be asked and 200 marks will be there. यहाँ पे मैं एक चीज साफ करना चाहता हूँ, वेरी वेरी क्लियरली बोलना चाहता हूँ that geography plus environment plus mapping together, these three will contribute to 33 questions minimum. ठीक है, out of this 100 questions, geography alone will give you, geography, environment and mapping, ये तीन अगर आप देखते हो 33 questions पूछा जाता है. Any average student, let's say any average student, if they score out of this 33 questions, even if you score 25 questions correct, कोई भी serious aspirant, अगर any serious aspirant, they can easily score this 25 questions. If you score this 25, you can literally get 25 into 2, that is 50 marks. Now imagine, कुछ ऐसे सवाल नेगेटिव भी हो सकते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया वो नेगेटिव या गलत हो गया. If you are good with this subject, फिर भी 47 plus marks you can get. और कट ऑफ क्या होता है? What is the cut off? Cut off is just hardly 90 marks plus or minus 5, and last year तो 80 से भी कम है कट ऑफ. अगर मान के चलो एक सब्जेक्ट पढ़ के अगर आप 50 मार्क लेके आ सकती हो या लेके आ सकते हो, तो can't you read polity, can't you read history, can't you read economics and get another additional 40 marks? It is quite doable. So that's why the subject of geography is considered to be the most important subject of all the subjects, and that's why it is also called as the mother of all subjects, right? Now let me quickly show you syllabus क्या होता है. देखो यार, syllabus very clearly mentioned है, Indian and world geography. Now Indian and world geography they call it. Indian and world geography में क्या पढ़ना है? तीन चीज पढ़ना होता है. एक है physical geography, दूसरा social geography, and then economic geography. So let me write it here. It is physical geography, economic geography. This physical geography of India and world, both you are supposed to read. Economic geography of India and world. Now when you look into the third aspect of the syllabus, it clearly says social geography. और ये social geography होता क्या है? What is this social geography? See, broadly you can divide geography into two different types. One, geography को आप physical geography, and these two together you can call it as human geography. You can call this as human geography, right? One is एक और human geography है.
तो देखो, अगर आप ज्योग्राफी को ब्रॉडली डिवाइड करते हो, यू डिवाइड लाइक दिस, दैट इज 1 फिजिकल ज्योग्राफी, second one is human geography. Human geography means it is economic geography also. Second component social geography होता है. तो फिजिकल ज्योग्राफी में 5 कंपोनेंट्स पढ़ाया जाता है और 5 कंपोनेंट्स पढ़ना होगा आपको. ये कौन सा ऐसा 5 कंपोनेंट्स है? इट इज जियोमॉर्फोलॉजी, सेकेंड वन इज क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड वन ओशनोग्राफी, फोर्थ वन बायोजियोग्राफी, मिट्टी के बारे में पढ़ना, एंड फिफ्थ वन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. राइट. तो ज्योग्राफी को ब्रॉडली यू कैन डिवाइड इनटू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स. वन फिजिकल ज्योग्राफी हैज 5 चैप्टर्स: geomorphology, climatology, oceanography, biogeography and environmental geography, whereas your human geography has economic geography, social geography. social geography में क्या क्या पढ़ाया जाता है? social geography का मतलब है population, settlement, उसके अलावा the other aspects of women, health, little aspects of geography, urbanization भी. economic geography में mines and minerals, mines and minerals. So this is what is you are supposed to know. Agar in a nutshell, when you study all of this, when you study this, इसको आपको क्या करना होगा? इन सब चीजों का करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा. From all of this, you should study with respect to India and world. ठीक है, ये हो गया आपका ज्योग्राफी सिलेबस. अब पढ़ना क्या है? ज्योग्राफी सिलेबस तो आपने देख लिया. चलो एक बार मेंस का भी सिलेबस देख लेते हैं. मेंस में सिलेबस जो कुछ भी आपने यहाँ पे लिखा है ना, वही चीज मेंस में भी होगा. देखो, प्रीलिम्स का सिलेबस काफी सिंपल सा दिया हुआ, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. नाउ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक है फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी. ये 3 चीजें हैं. राइट. फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सोशल ज्योग्राफी. यू ऑलरेडी नो फिजिकल ज्योग्राफी मतलब 5 चीज है: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. 5 things you are supposed to study. Social geography means population and little aspects of settlements. Economic geography, mines, minerals and industries. That's it. अगर आपने ये चीज पढ़ लिया, ज्योग्राफी इज विद इन योर डोमेन. प्लस इन सब चीजों का थोड़ा बहुत मैपिंग भी करना होगा. करंट अफेयर्स प्लस मैपिंग. इफ यू स्टडी दिस, इंटरनेशनल रिलेशंस आपके लिए आसान होगा अगर आप मैप के बारे में अच्छे से पढ़ते हो तो. उसके अलावा you will be very easily understanding about India and Indian topography, and you can write very good answers in paper 1 and paper 3 also. Right. अब चलते हैं मेंस की सिलेबस में क्या पढ़ना होगा, क्या क्या है. और बुक्स ऑल्सो गिव मी 5-10 मिनट्स, 5-10 मिनट रुक जाओ. मैं बुक्स के बारे में भी बताता हूँ कौन सा ऐसा बुक्स पढ़ना है और कौन सा ऐसा बुक्स नहीं पढ़ना है. देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, दे गो एंड पिक अप ऑल द बुक्स. बहुत सारे ऐसे बुक्स है, ये सब एनसीईआरटी बुक्स है जो आपको पढ़ना ही होगा. ठीक है. ये क्लास 6 का है, क्लास 7 का है, क्लास 8 का है, 9 का है, 10th का है. और 11th में 2 बुक्स है, एक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है. और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 12th क्लास की बुक है. वैसे ही इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये भी एक 12th क्लास की बुक है. तो अगर आपके पास टाइम है, आपका अटेम्प्ट 2027 में है. ठीक है, मान के चलो आपकी अटेम्प्ट 2027 में है, ये 2027 का अटेम्प्ट है. आपके पास अगर टाइम है, मैं चाहता हूं आप 6 से लेकर 12 तक पढ़ना होगा और इन सबका शॉर्ट नोट्स भी लिख करना होगा. इन सबका शॉर्ट नोट्स भी बनाना है. शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं वो भी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं. आप शांति से जस्ट बी पेशेंट फॉर सम टाइम. आई विल गिव यू द एंटायर पिक्चर ऑफ ज्योग्राफी फॉर यू. राइट. अब पढ़ना तो है,
6th क्लास की बुक पढ़ो, 7th पढ़ो, 8th पढ़ो, 9th पढ़ो, 10th पढ़ो, 11th एंड 12th, बाय द टाइम ये बुक पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2-3 दिन लगेगा। वैसे एक एक बुक कंप्लीट करके बाय द टाइम यू कम टू दिस बुक यू विल फॉरगेट व्हाट इज रिटन इन दिस बुक। ठीक है, इसके अलावा आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है, और इन ऑल ऑफ दिस आपने जो बुक पढ़ा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट भूलने का आवश्यकता बहुत हाई है। तो इसीलिए what I would recommend is you are supposed to study, you are supposed to study. For example, अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक इफ यू आर रीडिंग, आप क्या करो, इस जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक को क्लास 6 से भी पढ़ो, क्लास 7 से भी पढ़ो, 8 से भी, 11 से भी, यू कंप्लीट द एंटायर जियोमॉर्फोलॉजी एट ए गो। अब कौन सा ऐसा चैप्टर्स है जो जियोमॉर्फोलॉजी में है वो आपको जानना चाहिए। तो लॉजिक इज सिंपल, लुक हियर, जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर्स जो है बहुत इजी है। नाउ लेट मी शो यू द चैप्टर्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है, आई विल स्टेप अवे फ्रॉम द स्क्रीन सो दैट आप देख सकते हो। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो प्लीज क्विकली लिख लेना। जियोमॉर्फोलॉजी में जो आपको पढ़ना है, क्लास 6 में जाओ, चैप्टर नंबर 5 और 6 पढ़ो। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है क्लास 6 में। क्लास 7 में जाओ, आपको चैप्टर 2 और 3 पढ़ना है। क्लास 11 में जाओ, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 7 तक सारा चैप्टर्स पढ़ना है। जब आप ये चैप्टर्स पढ़ते हो, ऑल दिस जियोमॉर्फोलॉजी विल बी डन फॉर यू। ठीक है, आई विल स्टेप असाइड फ्रॉम द बोर्ड, इफ यू वांट आई विल वेट फॉर 1 मिनट। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बात कर सकते हो, यू कैन एनेबल योर माइक एंड यू कैन टॉक टू मी, राइट। सो इन टोटलिटी these are the chapters that you are supposed to study in geomorphology, right? किरणप्रीत कौर, अगर आपके पास, if you have any doubts you can ask me by enabling your voice chat also. The chapter number 6 and 5 of class 6, chapter number 2 and 3 class 7 की NCERT से, और chapter number 2 3 4 5 6 7 class 11 से आपको पढ़ना होगा, right? बस now let me quickly take you to the main syllabus before I go any further. देखो मेंस का सिलेबस भी काफी क्लियरली डिफाइंड है, जो आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहे हो, दिस इज द मेन सिलेबस। इस मेन सिलेबस में वॉट एवर यू हैव स्टडीड फॉर प्रीलिम्स वो सब चीजें यहाँ पे भी लिखा है। सेम थिंग, सी हियर इट इज फंडामेंटल्स विथ रेस्पेक्ट टू वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है आपको। इट इज आस्किंग अबाउट वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जो होगा वो वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा, एंड ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर वो भी फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी इज जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। इन 5 चीजों को फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। सो लेट्स क्विकली लुक इनटू फिजिकल ज्योग्राफी। वर्ल्ड लेवल पे आपको पढ़ना होगा। देन the second line of the syllabus says distribution of key natural resources across the world including South Asia and the Indian subcontinent. ठीक है, distribution of key natural resources across the world and South Asia it is asking about. India and see this is your ASEAN, this is your South Asia. South Asia is the neighboring countries of India, those countries which are part of the SAARC. ठीक है, 8 कंट्रीज होते हैं इन सबका। दैट मीन्स दे आर एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन द एरिया ऑफ माइंस ऑफ इंडिया इन दिस पार्ट ऑफ द रीजन। दैट मीन्स इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, दीज आर द कंट्रीज विच आर पार्ट। सो ये आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देना होगा। ठीक है, distribution of key natural resources across the world and including South Asia and the Indian subcontinent. South Asia and Indian subcontinent, right? What are the mines and minerals which are present in this area? You are supposed to know. Let's say करंट अफेयर्स में 4 दिन पहले पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में एक न्यूज आर्टिकल पढ़ाया गया। नाउ दे से दैट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है इंडिया को परमिशन मिला है इंडियन ओशन रीजन में, जहां पर
एक आइलैंड है सी माउंट, इट इज नॉट एन आइलैंड, इट इज अ सी माउंट बाय द नेम अफनाजी निकिटिन सी माउंट। अफनाजी निकिटिन सी माउंट। देखो प्रीलिम्स में ये सब सवाल पूछने का चांसेस तो बहुत कम है, बट जो मिनरल, whatever the mineral that is found under the sea, that mineral is important for your exam, right? So distribution of key natural resources across India, world and South Asia. Apart from that, it also talks about अगर आपके पास मिनरल्स है, मिनरल्स को इंडस्ट्रीज में भी कन्वर्ट करना होगा, तो ये जो इंडस्ट्रीज है, it is would be very clear that here this industries प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी इंडस्ट्रीज की तरह कैटेगराइज किया जा सकता है, राइट? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी इंडस्ट्रीज. नाउ सी हियर, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary industries. Primary, secondary and tertiary industries, these are the factors: primary, secondary and tertiary industries. These are the factors which are responsible for the, what are the factors that are responsible? You need to know about that. Coming to the third component, that is the geophysical phenomena such as tsunami, volcanic activity, cyclone, geographical features, ठीक है, that is geophysical features, और आइस कैप्स के बारे में आपको फ्लोरा और फौना के बारे में भी जानना चाहिए, राइट? सो इन अ नटशेल जो कुछ भी प्रीलिम्स में है, whatever is there in the prelims, इन्होंने elaborate करके दिखाया, right? Now coming to how to study, see NCERTs, तो you are supposed to know. Now what books to be followed? First priority is NCERTs, second priority the notes that we give, that is more than sufficient. Then third priority is you have to buy an atlas. You need to follow an atlas. Any atlas is fine. The atlas which you get to see on the board, any atlas is fine, but I would be recommending an atlas of this. ये atlas थोड़ा better है. Oxford atlas is also good. This is your Oxford atlas and Orient Black Swan atlas. या फिर स्टडी टुडे पब्लिकेशंस का एक और एटलस मिलता है जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एक्सक्लूसिवली बना गया. दिस एटलस इज आल्सो गुड, राइट? सो नाउ दैट, लुक हियर, कम टू अनदर बुक. इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना चाहिए? देखो मार्केट में कई सारे बुक्स है, मैं रिकमेंड करता हूं आपको कुछ नहीं पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में. जो एनसीईआरटी है वो पढ़ो, उसके अलावा whatever you get to see in the news articles, please follow it. If you have time, then go for this book called GC Leong. If you only have time, then go for this book called GC Leong. GC Leong एक ICSE syllabus के लिए text book माना जाता है. This is the textbook. You are supposed to read this. Now come to the chapters which you are supposed to read in geomorphology that I told you. ठीक है, ये नहीं है कि 6th क्लास उठाया 12वीं क्लास तक पढ़ते पढ़ते अपने टाइम यू हैव लॉस्ट. आपको क्या करना होगा, हर एक चैप्टर को यू हैव टू मेक श्योर उस चैप्टर को आप एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में पढ़ना होगा एंड उन्हीं चैप्टर्स पढ़ना होगा जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है. प्लीज डोंट रीड द एंटायर बुक इन टोटलिटी, राइट? सो कम टू क्लाइमेटोलॉजी. नाउ कौन सा ऐसा चैप्टर्स आपको पढ़ना होगा? क्लास 6, क्लास 7, क्लास 11 में in 3 books: class 6 geography book, class 7 geography book, class 11. Now chapter number 2 and 3 in class 6, chapter number 4 in class 7 and chapter number 8 to 12 in class 11. ठीक है, chapter number 8, 9, 10, 11, 12 in class 11. These are the chapters that you are supposed to study, right? Once you have written, let me know. अगर आपने लिख लिया हो तो please let me know so that I'll move further. You can also on your videos so that we can see each other. It will be more lively. ठीक है, आप अपना वीडियोस भी ऑन कर सकते हो. अगर आपके पास कोई भी सवाल है, you can interact with me. I'll be addressing all your doubts. Right? ये है क्लाइमेटोलॉजी का. और वैसे ही ओशनोग्राफी में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आपको पढ़ना होगा. केवल क्लास 7 और क्लास 11 की बुक्स पढ़ना होगा आपको. इनमें से चैप्टर 5 और चैप्टर 13, 14, that is more than sufficient for your oceanography. Class 7, chapter 5, class 11, chapter 13, chapter 14. And at the end of this session, don't worry, I'll also give you the list. List जो आपको पढ़ना है ना, ये list दे दूंगा. उसके अलावा whatever you can do, what you can do is biogeography,
मतलब सॉइल्स के बारे में पढ़ना, क्लास 9 में भी होता है, क्लास 11 में भी होता है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज में 6 to 10th एंड 15-16 चैप्टर्स पढ़ना होगा। इंडियन ज्योग्राफी, दिस इंडियन ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 6, 9 and 11, 3 books you are supposed to read. Like this, I have a very big list of chapters that you are supposed to read in an orderly fashion. Now, whoever stays till the end of this particular session, we shall also be giving this particular slides, only the slides of the chapters that you are supposed to read. Geography से कौन सा ऐसा themes आपको divide करना होगा, जैसे जैसे origin and evolution of the earth, ठीक है, internal structure of the earth, इनमें से कौन सा ऐसा चैप्टर्स है, कौन सा ऐसा क्लास में है, ये सारा लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बट पेशेंस रखो। अब आते हैं ज्योग्राफी में, व्हाट आर द चैप्टर्स एंड हाउ डेप्थ वी आर सपोज टू गो। देखो, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है? आपने पढ़ा है कभी? व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। See, geomorphology means anything that is there on the surface of the earth, ठीक है। It can be a mountain, it can be plain area, it can be a plateau, it can be a valley, whatever is there on the surface of the earth, and how did this mountains form, how did this plain form, how does this plateau form. If someone questions and understands, अरे यार ये बना कैसा है, वो होता है जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी ऑल्सो मीन्स इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, जियोमॉर्फोलॉजी इज वेरी डीप, it also studies about the interior of the earth in very detailed manner. Now, what does interior of the earth mean? See, interior of the earth means, you all know that on the surface of the earth you have a mountain, you have a plain, you have a plateau, but वैसे ही geomorphology also tries to study जमीन के अंदर क्या है, what processes are involved inside the interior of the earth, ठीक है। what kind of processes are involved in the interior of the earth. When you go into the interior of the earth, there are big large scale nuclear material, fission type of material that explodes on a regular basis with so much of heat. Now this heat which rises and then moves along, these kind of processes are called as endogenic processes. These are called as endogenic processes. They are called as endogenic processes. So geomorphology means it is the study of two aspects. There are a couple of forces which helps in the formation of the certain entities, that is, जो कुछ भी सरफेस के ऊपर, जैसे अगर कोई माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, या कोई वैली है, अगर ओशन के अंदर ये सब प्रेजेंट है, तो whatever is there above the surface of the earth, we call this as exogenic. Whatever is happening within the interior of the earth, we call this as endogenic. ठीक है, endo and this is exo. Exo means sunlight is also exo, wind is an exo, likewise soil is an exo, rainfall is an exo. Exogenic forces or exogenic processes. Your geomorphology tries to understand the relationship between what is happening within the interior of the earth to what is happening above the surface of the earth and how these are formed. See, geographers initially what they have thought is they try to understand how did a mountain form. ठीक है, देखो, पहला ये subject of this subject of geography, how did it evolve, you need to understand this. ये सब्जेक्ट तब एवॉल्व हुआ जब ट्रैवलर्स एक जगह से लेकर दूसरी जगह जब उन्होंने ट्रैवल करने लगा, दैट इज व्हेन दे गॉट टू नो, हाँ वहां पे पत्थर है, वहां पे पहाड़ है, वहां पे प्लेन एरिया है। और कुछ ऐसे जोग्राफर्स या ट्रैवलर्स उन्होंने ये क्वेश्चन किया, ये बना कैसा है। मतलब ट्रैवलर्स चलते चलते दे टोल्ड अबाउट दीज एस्पेक्ट्स, और कुछ टाइम के बाद द geographers came and started to question how did it form, and the solutions are because something is happening within the interior of the earth and that has led to the formation above the surface of the earth. जो जमीन के अंदर हो रहा है वही एक रीजन बना है for the formation of something on the surface of the earth, and your geomorphology tries to understand this relationship and the formations, right?
So this is how you will get to see the formations. Apart from that, your geomorphology also tries to understand the formations of since the beginning. Okay? Since the beginning, how did the formation of the earth took place? How did the formation of the planes took place? Planets, asteroids, your solar system. This is what we try to understand. See, Deco, geomorphology also tries to understand a serious question that everyone has. How did a human form? How did the entire world form? See, geomorphology or geography tells you the entire world came from a singularity. अब सिंगुलैरिटी क्या होता है? देखो, सिंगुलैरिटी का मतलब सिंपल है. ये मान के चलो आज हमारा क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, लेकिन मुझे ये लगा यार मैं 200 बच्चे और बिठाना चाहता हूँ. ठीक है, आई हैव कॉल्ड 200 odd students and asked them to sit in the same classroom. What happened to the density of the classroom when I increased this 200 students? देखो, इस क्लासरूम का डेंसिटी बढ़ता है. वैसे ही मुझे लगा ये 200 से ठीक है, मैं और 1000 लोगों को बुलाता हूँ और क्लासरूम का साइज सेम ही रखता हूँ. छोटा क्लासरूम है, 1000 लोग को और मैं अगर बुलाया, इस क्लासरूम में बिठाया, तो there is lot of density that will increase, temperature will also increase. Now imagine all the population in Punjab and all the population in Chandigarh. I call them, I'll break their bones, nuts, and convert them into powder or whatever, and I make them sit in this classroom. Imagine hypothetically. ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट theoretically पॉसिबल है ये सब. आई एम नॉट टेलिंग दिस, आइंस्टीन टोल्ड दिस, राइट? So if you break their bones and twist and turn and change the form of human body and put them into this classroom, it's quite possible. Now you tell me what happened to the density. Will it increase or decrease? Density will increase. What happened to the temperature? It will increase. अब वैसे ही आप ये मान के चलो जितने भी दुनिया में, ठीक है, all the world, let's say this is your earth, you wanted to convert this earth, turn, twist and crush it to become a tiny point. Imagine the entire population of the world, entire objects, imagine they are all crushed to this particular point. ठीक है, what will be the density of this point? What will be the density? Infinite density, infinite pressure and infinite temperature it will have, right? अगर इस टाइप का कंडीशन, इफ यू हैव सच ए काइंड ऑफ कंडीशन, आपके पास अगर ये कंडीशन एग्जिस्टेंट है, इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी. सिंगुलैरिटी, इट इज कॉल्ड एज सिंगुलैरिटी. सिंगुलैरिटी क्या होता है यार? सिंगुलैरिटी वो होता है जहां पर इन्फिनाइट डेंसिटी हो और बहुत छोटा टाइनी वॉल्यूम के साथ दुनिया का सारा चीज, बोथ ऑब्जेक्ट, मैटर, टाइम, स्पेस, हर चीज आप एक टाइनी ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आओ. इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, राइट? सो इट वाज सेड 13.7 billion years ago there existed a singularity. For reasons which we do not know, one fine day this got blasted. ठीक है? Now this blast we call it as Big Bang. Imagine this blast took place. This small tiny dot which is there, all of a sudden, for reasons which you do not know, it got blasted. Now from the blast came out the origin and evolution of the earth. How and all I'll explain in the main classroom. ठीक है, कैसे बना ये सब चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, बट आपको ये समझना होगा the entire world came out from a tiny dot. We call this as singularity. Singularity means infinite temperature, infinite density, infinite mass, tiny volume, बहुत छोटा वॉल्यूम है, वहां से निकल के आया है सिंगुलैरिटी. अब धीरे धीरे वो जो सिंगुलैरिटी का ब्लास्ट हुआ था, एक नेबुला बना. नेबुला मतलब डस्ट पार्टिकल्स. ये आगे मैं समझाता हूं इन द फर्दर क्लासेस एंड ऑल. नाउ दिस इज नेबुला. ठीक है, nebula looks like this, right? From such a small tiny object, big blast happened, and from that blast itself we got to see the origin and evolution of the entire earth and universe. Now this is a long story. This story is a beautiful story which we'll try to understand in the main classroom. How did it form, right? So like this, over a period of time you will realize that the earth
has its sisters and brothers which came out from the same mother, that is your sun. See, it is believed that जितने भी planets है सब planets sun से बाहर निकल के आया. कैसे मैं आगे समझाता हूँ in the main classroom. Like that, Earth, sun has its own planets, they revolve around the sun. Sun also revolves. Do you know that the sun revolves? How do we know that the sun revolves? Through a concept called sunspot. ठीक है, वो भी अभी करंट अफेयर्स में है. You need to know about planets. And geomorphology also talks about ये जो planets है, how do they rotate and revolve. हर एक planet अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करता है, अलग अलग स्पीड्स के साथ. तो ये जो planets है रोटेट क्यों कर रहा है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा होकर. कुछ ऐसे प्लैनेट है विच रोटेट्स इन दिस एक्सिस, कुछ ऐसे प्लैनेट टिल्ट हो गया और ऐसे रोटेट कर रहा है, और कुछ प्लैनेट तो उल्टा ही हो गया. ये देखो वीनस, इट इज कंप्लीटली टिल्टेड. नो, व्हाई? व्हाट इज द रीजन? कैन यू टेल मी why the earth axis is tilted? Earth, why is it not rotating in this axial plane? Why the earth is rotated? So look here, this is ye hai rotational plane, right? This is not rotating like this. Our earth is tilted, right? Our earth is tilted. Can you tell me why the earth is tilted? I have a special gift for you if someone gives me the true answer. Yes, आप बहुत शांत बच्चे हो, कोई बात भी नहीं कर रहा है, सब शर्माते हैं. So please let me know why is our earth tilted by 23.5 degrees? Yes, please let me know in the comment section. Your earth is tilted because isn't here. Earth got hit by asteroids which are there between Mars and Jupiter के बीच में जो asteroids है वो. Now I'll explain all of this in detailed manner in the advanced classes, but as of now you need to know हम क्या पढ़ने वाले हैं. वैसे ही you will learn about the other celestial bodies which are there in the interior of the earth and above the earth. Plus you will also learn about sun. देखो, I told you sun also revolves, sun also rotates, but sun revolves around you. It revolves around Milky Way galaxy. वैसे sun, how do we know that sun rotates? Because we kept a satellite which watches the sun, and the work of this satellite is to observe the sunspots. Now what are the sunspots? जहां डार्क स्पॉट्स होता है सन के ऊपर, वहां से ना बहुत ज्यादा तेज एनर्जी निकल के आता है. वी कॉल दिस एज कोरोनल मास एजेक्शन. तो ये कोरोनल मास एजेक्शन क्यों निकलता है? व्हाई इज इट रिलीज्ड फ्रॉम द सन? I'll tell you in the further classes, again in the advanced classes, but this is also part. Sunspots kahan hai, and this sunspots se of energy will be released. Now these waves are called as electromagnetic waves. अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है. अर्थ वो सब रेस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपना एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बट इस इंटरैक्शन के द्वारा कुछ ऐसे एरियाज में जो इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट to become this beautiful lights. Now we call this as northern lights. तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ये जो लाइट्स है कौन सा लेयर में देखने के लिए मिलता है? In what layer do you get to see? What layer of the interior, what layer of the atmosphere you will get to see? Troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, thermosphere. Please let me know in which sphere do you get to see these lights? Yes, इन सबको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है. इन द सदर्न हेमिस्फीयर दे विल बी कॉल्ड एज सदर्न लाइट्स. अरोरा बोरियोलिस या ऑस्ट्रेलिया बोरियोलिस दे विल बी कॉल्ड. ठीक है, अरोरा बोरियोलिस या ऑस्ट्रेलिया बोरियोलिस दे विल बी कॉल्ड. ओके, ये डन. नाउ दिस इज ऑल्सो यूर सपोज टू स्टडी, एंड एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है विच कलर इज बिकॉज ऑफ विच फ्रीक्वेंसी. देखो, if oxygen is present, you will get to see the pink color. Nitrogen is present in that layer, you will get to see
the pink color, magnesium is green color. Like that, you have different colors which are there. Apart from that, your geomorphology also tries to study in detail about the interior and exterior. Now next concept is climatology. देखो यार, इस climatology में we are going to study a lot. The next topic is climatology. Within this climatology, we will be learning about the clouds. In simple terms, climatology means it is this. See, climatology means if suppose this is your earth, देखो ये आपका अर्थ है. अर्थ के ऊपर मल्टीपल लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर. आयनोस्फियर इज विद इन द थर्मोस्फियर, राइट. बहुत सारा ऐसा लेयर्स है. जमीन से लेकर आप 400 किलोमीटर तक जाओ, हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है. लेकिन जो अर्थ का एटमॉस्फेयर, एक्चुअल एटमॉस्फेयर है ना, वो 120 किलोमीटर के इर्द गिर्द खत्म होता है, राइट. सो 90% ऑफ योर सिलेबस of climatology is confined to 10 kilometers above the surface of the earth, और इसे कहते हैं troposphere. This is troposphere, right? Whereas another 20-30% of the syllabus roughly is present above. That means you'll be studying about satellites, you'll be studying about various layers. But when you look into the rainfall, wind, let's say this is 10 kilometers height, your rainfall is also present in this layer. Thunderstorms are present in this layer. Wind, fast moving winds are also present in this layer, right? Like this, you have multiple fast moving entities. Thunderstorm, lightning, you name it, twisters, hurricanes, cyclones, everything is present in this 10 kilometers above the surface of the earth. बस 10 किलोमीटर के ऊपर. यही है हमारा सिलेबस. ये क्लाइमेटोलॉजी में वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. इसमें आप बादल के बारे में पढ़ेंगे. यू विल स्टडी अबाउट द क्लाउड्स इन डिटेल, राइट. एंड लाइक दिस यू विल आल्सो स्टडी अबाउट हाउ द अर्थ हीट्स. अर्थ हीटिंग इन स्पाइट ऑफ 24 आवर्स ऑफ सनलाइट. समर में 24 आवर्स ऑफ सनलाइट होता है नॉर्थ पोल के पास, फिर भी वहां का जो स्नो है मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है? वाई? इक्वेटर के पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्यों? ये सब आपको जानने की जरूरत है, राइट. वैसे ही इंडिया में जो टाइम है, पाकिस्तान में जो टाइम है, यूएई में जो टाइम है, इज इट द सेम टाइम? नो. नाउ रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इफ यू स्टार्ट टू स्टडी, आपको ये समझ में आता है द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है. और जो हमारा भाई लोग है जो नॉर्थ ईस्ट में है, उनका जो सनराइज टाइम होता है ना, वो सुबह 4 बजे होता है. सुबह 4 बजे आप आंख खोलो, अपने आप सूरज, खड़े सूरज दिखता है आपको जब आप असम पहुंच जाते हो. वही आप गुजरात में, यू वेक अप एट मॉर्निंग 6, you won't see the sun that early. Why? This is what your geography tries to tell you in each and every aspects, right? ये है आपका climatology, right? इस climatology में you learn about the rotation and revolution of the earth in detail. Rotation and revolution of the earth, you'll be learning about it in detailed manner, right? Okay, यहां तक कोई doubts है? Any doubts? Our classrooms are going to be very interactive, so don't worry about that. Conceptual clarity, I'll make sure you'll on the top notch. You'll have the best quality that you'll ever have faced, right? Apart from that, you are also supposed to know about the cyclones and also the other forms of clouds which are there, right? Next, we'll go to oceans. ठीक है, ओशनोग्राफी. ओशनोग्राफी में क्या पढ़ना चाहिए? मैंने कहा था चैप्टर 13, चैप्टर 14 ऑफ क्लास 11 बुक पढ़ो, और क्लास 7 में एक आध चैप्टर पढ़ना होगा आपको, राइट? बस इतना पढ़ो, थिंग्स विल वर्क फॉर यू. नाउ लुक हियर, इमेजिन दैट योर एंटायर ओशन इज ड्राइड अप विथ वाटर. नाउ व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स डू यू गेट टू सी? इमेजिन हमारा जो इंडियन ओशन है, पूरा entire Indian Ocean is submerged. Whatever the Indian Ocean that is submerged, it is dry. Now imagine if the Indian Ocean is completely dry, what could be the landform that you'll get to see there? जो landform है ऐसा दिखता है. देखो, ओशनोग्राफी का कहना यह है, हमें ओशंस आर द लास्ट रिसोर्ट्स.
we have to study the movement of the ocean water. मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर का मतलब ओशन में पानी कैसा मूव हो रहा है, वो ऊपर और नीचे, दैट मीन्स इज इट राइजिंग एंड फॉलिंग, या आगे पीछे जा रहा है पानी, इज इट वेव, इज इट टाइड और इज इट करंट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वेव, ए टाइड एंड अ करंट व्हाइल दे मूव. कौन सा ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशंस आसपास में ये क्रिएट कर रहा है, कौन सा ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो आसपास के एरियाज में ये क्रिएट कर रहा है. So in totality, it is this. You are supposed to study about the ocean in detail. See, in the oceans, there are more volcanoes in the interior of the ocean than on the land. There are more mountains on the within the ocean than on the land. You'll be surprised to see that the Indian Ocean has more volcanoes than the ones which you see on the surface of the earth. ये है हमारा इंडिया. दिखने में तो ऊपर पानी साफ दिखता है, बट अब अंदर जाओ बहुत सारा ऐसे माउंटेन्स देखने के लिए मिलता है. अगर यही माउंटेन इफ इट इज नियर अबाउट 1000 meters, हम उसे कहते हैं सी माउंट. दैट इज कॉल्ड एज सी माउंट. नाउ द सेम माउंटेन इफ इट इज लेस देन 1000 meters, वी कॉल दिस एज बियॉन्ड. राइट. सो you are supposed to study about the movement of the ocean water and also the entire एस्पेक्ट्स ऑफ ओशन. देखो, ओशन का वाटर ना 3 टाइप्स मूव करता है. एक, योर ओशन वाटर राइजेस एंड फॉल्स, एंड इट इज लाइक ओशन वाटर राइजेस एंड ओशन वाटर फॉल्स, वी कॉल दिस एज टाइड. इफ ओशन वाटर मूव्स इन सर्कुलर मैनर, वी कॉल दिस एज वेव्स. इफ ओशन वाटर मूव्स फॉरवर्ड लाइक दिस, वी कॉल दिस एज करंट्स. अब ये जो करंट्स है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस and they are also present in the ocean bottom as well. देखो, you know, अभी थोड़ी देर पहले आपने टोपोग्राफी देखा है. टोपोग्राफी का मतलब है पहाड़ है या पत्थर है. what is the height or the depth of the water with respect to a mountain. तो ये देखो, we will also be studying the interior of the oceans in detail, how the water is moving. Now I'll step away. Please look. ये जो पानी है, पानी मूव करने का एक डायरेक्शन होता है. This direction is based on the internal topography as well. Along with that, Coriolis force भी एक्ट करता है. ठीक है, Coriolis force भी एक्ट करता है. Right? Yes, very good. देखो, Coriolis force will be there. Likewise, you'll also have other factors which plays a vital role. Now all these waters, they will also sink. They also sink. ये जो water है ना, ये sink भी करता है. Sink करके they move in different directions. Now this water movement is the primary reason why the heat on the earth is getting heated daily. Now that heat is distributed across the globe. Right? Heat is getting distributed across the globe. Right? So you are also supposed to study how the water is moving at which place. Right? That means at a depth of 3000 meters beneath the surface of the ocean, there the water moves at a very slow rate. Now the same water to come back to its position, it will take near and dear about 500 to 1000 years. Yes, you heard it right. It will around take 5000 odd 500 to 1000 odd years for the water to come back to the same position. Right? For the water to come back to the same position, it will take 500 to 1000 odd years. Now this is what is how the water moves. और इस मूवमेंट को सरफेस के ऊपर आप प्लॉट करो, इसे कहते हैं करंट्स. Now these are called currents. You are supposed to study about currents in detail. Plus there are some tides. Tides are rise and fall of the water. Kabhi high tide, kabhi low tide. Right? How are they formed? This is what is studied in your oceanography. Right? Next, see, oceans are also very important entities because दुनिया का आज भी 95% of the transmission of data with respect to internet is happening through these cables. और ये जो cables हैं, they are led under the water.
दैट्स वाई हमें ओशंस को पढ़ना भी बहुत जरूरी है. ओशन बॉटम टोपोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है. See, there are a lot of minerals on the surface of the earth. वैसे ही land surface is only just 21 odd percentage, but what about rest? It is completely water. तो जमीन वाटर के नीचे कितने ऐसे मिनरल्स होगा, ये सब भी हमें पढ़ना होगा, राइट. वी ऑल्सो वॉन्टेड टू सेंड आवर मैन इन टू द स्पेस, सेंड आवर मैन इन टू द मून एज वेल. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज बायोजियोग्राफी. बायोजियोग्राफी का मतलब है सॉइल. ठीक है, मिट्टी बनता कैसा है, एंड हाउ डज दिस soil forms over a period of time, and what kind of soils are there in India. See, you know that for the formation of soil, it takes thousands of years, but erosion, it can happen in within a minute. A good rainfall, soil can get eroded, मिट्टी जा सकता है. फिर से मिट्टी खरीद के लेके आना पड़ेगा, फार्मर के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, राइट. पंजाब में हर एक soil, every soil, whatever the type, black, red, whatever the soil, it is depleted. That means the nutrition is lost in the Punjab soil. It's just a piece of fertilizers which is put into the soil, right. Soil का अलग अलग layers होता है, कौन सा ऐसा layer में कौन सा ऐसा nutrients देखने के लिए मिलता है, या फिर how does a rock got converted into a soil. This is what you are supposed to learn in detail, right. सो दिस इज व्हाट इज बायोजियोग्राफी. उसका पेरेंट मटेरियल, जैसे ग्रेनाइट की पत्थर है, ग्रेनाइट की पत्थर से, ग्रेनाइट रॉक से यू विल गेट टू सी रेड सॉइल फॉर्म्ड. वैसे ही बसाल्टिक रॉक है, जैसे ये बसाल्टिक रॉक अगर पेरेंट मटेरियल है, फ्रॉम दिस टू सॉइल्स आर फॉर्म्ड. एक है लैटराइट और दूसरा है ब्लैक सॉइल. वन लैटराइट सॉइल एंड अदर इज ब्लैक सॉइल. दोनों का पेरेंट मटेरियल सेम है, बट अलग अलग क्लाइमेट्स होने के कारण, एक जगह हॉट क्लाइमेट है, एक जगह कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण, wherever you have hot climate, there you will have black soil. Wherever you have rainy type of climates and high temperatures, laterite soil देखने के लिए मिलता है. तो you need to know all of this in detail. We'll be explaining. Apart from that, the action of animals, ठीक है, how animals play a vital role in this. Along with that, the concept of bioturbation. Bioturbation is nothing but the action of animals on the soil. Now, how these actions are going to change the formations of the soils? ठीक है, how these actions are going to change the formations of the soils. ये वीडियो देखो 1 मिनट, अपने आप आपको समझ में आएगा why the earthworms are considered to be the friends of the farmers. I hope now you understand why the earthworms are called as the friends of the farmers. If no earthworms, no biotic activity. Biotic means no living organisms are there here. They will not decompose. Now imagine the living organisms. Finally, they have converted the leaf and the litter into soil. So this is a good quality of soil, right? Whereas this one is not a great good quality of soil, right? So the species are important here, right? This is what is bioturbation. उसके अलावा आप ये भी पढ़ना होगा. I'll teach you the layers of the soil, what kind of layers we have. And questions are also asked in this. There are different types of soils. What is black soil, alluvial soil, ठीक है, laterite soil, red soil, arid soil, forest soil. Where the topography of India, why your India is different as compared to other nations, why we call India as a subcontinent. Once you understand the topography, things will be easier for you. See, we'll study the journey from all the way. The India started its journey from the southern hemisphere to today's time period for the formation of Himalayas. ठीक है, India, the movement of India's journey all the way from the 250 million years to time period, current time period. We'll be studying about that. This is what is the Indian geography. Questions are asked here. The topography of India. Why do you have Western Ghats, Eastern Ghats, Himalayas, Northeast Himalayas? Rajasthan में desert क्यों है? Central Highlands क्या होता है? Nilgiri Mountains क्या है?
as a how the people live here, how the people live there, how the people live there. This is what you're going to study in detail. When it comes to ये जो economic geography है, this is what is physical geography. ठीक है, physical geography लगा, आप economic geography भी पढ़ना होगा. उनमें से mines, minerals, where they are found. Why did we establish all the majority of the heavy industries in this part of the region of India? Why did we establish the majority of the industries in this part of the region of India, or one industry here and one more industry here? Majority of the industries are confined to this area only. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल्स थे, संताल ट्राइबर्स, और नदी थे. Minerals are present here, so that's why we have established ourselves here. स्टील प्लांट, टाटा का स्टील प्लांट, जो पहला स्टील प्लांट है इंडिया का, वो यहाँ पर बना है. क्यों? Why not in any other places? So these things we shall be learning in detail. And when you look into the topography, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो टोपोग्राफी है वो काफी अलग है. You can't cultivate much. अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर, आप even if you do some kind of agriculture here, this flood rate is very high, so this entire flood rate is going to get damaged. This entire the flood rate is very high in this part of the area, so the crops will not sustain, right? इसके अलावा you need to study about the industrial geography as well. Industries, settlements. See, look, settlements are of different types. Population and settlement geography. एक सिटी ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे एरियाज है, if you look into, the population is majorly concentrated across the globe on next to the coastal areas. Now, why they are present across the coastal areas? Why is the population majorly present across coastal areas? You look at Australia, the population is majorly present in the coast. बाकी हल्का फुल्का इंटीरियर्स. दुनिया का 50% पॉपुलेशन जो है वो कोस्टल एरियाज पे प्रेजेंट है. Why? Life is easy in the coastal areas. In the interiors, rainfall can be a problem, safety can be a problem, forest can be there. Now let me show you the India's population. क्यों ऐसा सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है इस एरिया में क्यों है? Why do we have lot of population in this part of the area? It is because of Ganga river. पाकिस्तान को देखो, it is having a linear population. Why? Because this is Indus river, this is Ganga river. ठीक है, आप इस एरिया को देखो, ये गोदावरी और कृष्णा का रिवर है. जहां जहां नदी है वहां वहां पॉपुलेशन ज्यादा होता है. और ये जो पॉपुलेशन है, नदी के साथ आप एक मंदिर बनाओ और इसे पूजा करो and develop a ghat, and in that part of area the population will be increased. Example, Varanasi has very high concentration of the population, right? The entire stretch of Ganga, wherever you have Ganga, you have high populations. हर साल alone Uttar Pradesh is creating a new Australia with respect to population. That is the total amount of people who are born in Australia, in the Uttar Pradesh. A new Australian population is every year created. That is the total number we are adding in Uttar Pradesh, right? So in totality, you should also learn about a planned city and unplanned city. Dekho, I'll show you a few places. See, if you have a planned cities are beautiful cities. Look here, I'll show you a few places in India. If you have ever lived in these places, you consider yourself to be lucky. Look at these places, how beautifully they are led, how beautifully the cities are there. The roads are well led, there is good green cover and tree cover is there, the buildings, proper road construction is there. Now this is a planned city. Where is this? New Delhi, Luton's Delhi. But I'll take you few kilometers away from this place. The real India is somewhere, the reality is here. Look here, please look here. What is the difference between a place that you have seen few minutes before, few seconds before, and between this place? That was a planned city, this is an unplanned city.
Would you like to live in this area? No, not you, anyone. Not anyone would like to live. But poverty will force them to live in these areas. Do you have good drainage system? No. You have to study about urbanization. Now, how did this area turn into a place like this? But whereas a place which you have seen few 30, 40 seconds before, it is intact with good green cover. The rich lives there. See, the ultimate agenda of the urban geography is to make living easier, to make living lively. Quality of life should be there. यहाँ पे health infrastructure is not good, drainage system is not good, dengue can easily be formed, thefts will be more, people fight for the daily needs and necessities. That is the struggle of life. This is also India and that is also India. Like this, we have many cities which are planned and many cities struggling to get a basic water tap connection to their home. So our geography tries to study all the way from the Big Bang theory to the urbanization and population. In such a way, they wanted to integrate these two and give a better quality of living for the people. In this, the syllabus is divided again. Let me show you this syllabus. It is divided as the primary, secondary, and tertiary industries in the industry sector. Likewise, fundamental, salient features of the physical geography of the world. And lastly, geophysical phenomena like earthquakes and all. Now, look here. This is a question which is asked directly from NCERT. कौन सा एनसीईआरटी? क्लास 6 से 2019 में. ये 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, ये भी एक एनसीईआरटी से पूछा गया. Likewise, prelims question in 2018. This is the question. This was also asked from NCERT. See, 50% of the questions directly come from NCERT in geography. 50 to 60. बाकी एनालिटिकल होता है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, मैपिंग पढ़ना होगा, वहां से आता है. अगर आप इस सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया तो it is going to clear the prelims. This is what I can guarantee for my students. You attend all my 30 classes. ठीक है? When you complete these sessions, there would be a day you'd be smiling out from my class saying that geography बहुत आसान है. Geography पढ़ने का एक तरीका होता है. Understand, conceptual, simplify, and then study. If you study like that, things will be easier. If you just wanted to go open, read book, class 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, by the time you come to 12, 6th is gone. And by the time you start to write answers, you don't know what you have studied in cyclones. So conceptual clarity plays a vital role. And इसे पढ़ने का तरीका यही एक तरीका है जो toppers, many of my students have cleared this exam with this particular strategy. Right? Now, these are good number of questions which are asked from the NCERTs. Directly, you will find them in the NCERTs. Right? Clouds ke upar questions hai. There are multiple questions that are there. So this is what is geography. If you have any doubts, please let me know. I'll open the mic for you and I'll be waiting for 1 minute. If you have any doubts, you can ask me. If you don't have any doubts, I consider that आप एक विद्वान हो, आपको सब कुछ आता हो, इसीलिए you know everything, and that's the reason why you are not able to ask any question. What should I understand? Tell me. What books to be studied? NCERTs are to be studied first, and the notes that we give, that is more than sufficient. Mapping का classes होगा? हाँ, जरूर होगा mapping classes. Yes. I hope I have given a brief understanding about geography क्या होता है. ठीक है? In a nutshell, this is what is your geography. You have any doubts, please let me know. I'll be very happy to address all of your doubts in detail. ठीक है? Syllabus, I'm again opening the syllabus for mains. ये है syllabus for mains. Yes. Any doubts, you can post it into the comment section as well. Or my contact number you want? You can directly get in touch with the counselor who is there. She'll give you my contact number. You can have a conversation with me as well. Okay. We'll stop for today, right? And we'll continue in the next session. Thank you
And my name is Madhusudan Reddy. This is what is your geography, the overview, what to study and what not to study. Right? Thank you.